Well, Prime Minister's blockbuster entry in Delhi poll campaign has set the agenda and narrative for the upcoming polls. Armed with service delivery data of his government, Prime Minister went all out against the Aam Aadmi Party, and in doing so, he clearly drew the battle lines. He raised the Aam Aadmi Party carefully crafted Sheesh mahal of braveries in a run-up to the assembly elections, and he also said that Aam Aadmi Party has been disastrous for the Aam Aadmi in the national capital. It's like an apda, he said, and it's a rain that needs to end. Soon, Aam Aadmi Party and the Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal, who's known for mimicking BJP's playbook in a game of one-upmanship, issued a rebuttal and, sticking to the template, Aam Aadmi Party supremo tried to turn the tables on Bharatiya Janata Party over the Abda attack, saying that it was the Saffron Party, in fact, that was crisis-ridden in the national capital. Crisis of Chief Minister phase, agenda and narrative. Have a look at the war of words. चार करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। 2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। प्रधानमंत्री जी दिल्ली आए थे। दिल्ली के लोगों द्वारा प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को केवल गालियां देने का काम किया। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। Well, the Bharatiya Janata Party has now released a song that is in all likelihood going to be the poll pitch for the upcoming assembly election. And the focus is clearly on the saffron identity. And with Aam Aadmi Party's focus on pujaris and temples that we've been witnessing in the last 1 week, the song is clearly to counter the impact. Here's a glimpse of the song. Campaign did not go unnoticed, even the address by the Prime Minister. Now, the Congress leader Sandeep Dixit acknowledged that for the first time, in fact, he felt that BJP was also in the fray in the national capital. Have a look at what he said. चलो पहली बार ये तो लगा कि बीजेपी भी लड़ रही है। अभी तक तो बिल्कुल ही गायब थी, न मुद्दों से गायब थी, दिल्ली से गायब थी, समझ में नहीं आ रहा था। हमको तो ऐसा लग रहा था कि कुछ आम आदमी पार्टी में आपस में कुछ बातचीत हो गई होगी कि यार आप बाहर रहना, आपकी बात दिल्ली में ले लूंगा। क्योंकि आपको याद होगा आज से कोई 5-6 साल पहले आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे लिखा होता था ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल, तो मुझे लगा फिर इसी तरीके की कोई एग्रीमेंट होगी। लेकिन आज जो बातें कही प्रधानमंत्री ने वो बड़ी निराशाजनक रही। पहली चीज़, उन्होंने कुछ झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में हमारे रहने वाले भाई बहनों को मकान आवंटन किए। ये तो कांग्रेस के समय की स्कीम थी। Well, on the other hand, Aam Aadmi Party is also upping its social media game, intensifying the poster war. Aam Aadmi Party targeted Delhi BJP chief Virender Sachdeva amid speculation that he will not be contesting the upcoming polls. The party put up a poster on X showing Sachdeva in Milkha Singh's avatar, similar to the character in Bollywood film Bhag Milkha Bhag, with a caption saying "Kya hua? Dar gaye?" with a question mark. Then came the posters mocking the Bharatiya Janata Party lack of CM face in the national capital, punning on a movie, and called it Lapata Dulhe. Now, the agenda war on social media are equally matched by the war of words offline as well. Listen in. आम आदमी पार्टी जिसने बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे अद्भुत काम करके दिखाया, आप उसको आपदा पार्टी कह रहे हो। वो पार्टी बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी जिसने 2 करोड़ रोजगार पे झूठ बोला, किसानों के फसल का दाम दोगुना करने पे झूठ बोला, महंगाई कम करने पे झूठ बोला, 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देने के नाम पे झूठ बोला, काला धन ला के सबके खाते में 15 लाख देने के नाम पे झूठ बोला। जो पार्टी दिन रात झूठ बोलने का काम करती है, वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पे कमेंट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, हर काम में बाधा डालने का काम मोदी जी ने
और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल का जमीन से संपर्क कट गया है। अब अरविंद केजरीवाल ना तो ज़मीन से, ग्राउंड से, लोगों से, गरीबों से, झुग्गी वालों से, अनुतराइज कॉलोनी लोगों से, कहीं से भी अब वो संपर्क में ही नहीं है। वो आदमी एक डिलेमा में फंसा हुआ है जो झूठ और लूट की दुनिया है। अरविंद केजरीवाल आज के दिन में स्वयं में दिल्ली के लोगों के लिए आपदा बन गए हैं। कहाँ तो आए थे आपदा हटाने, खुद ही बन गए आपदा। इसलिए आज दिल्ली में, बिल्कुल ठीक कहा है आपने, कि अब आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि दिल्ली की आपदा सरकार ने किस तरह से दिल्ली को लूटने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज दिल्ली को एक नई दिशा देने का काम किया है। उन्होंने ये भी बताया कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो चाहते तो वो भी शीश महल बना सकते थे। तो सीधा सीधा तंज था उस चोर पर, उस भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल पर, जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है। And meanwhile, there's no end to run in between Delhi LG and the Aam Aadmi Party, and this time they are at loggerheads over the Farishte scheme. To put things in context for the viewers, Delhi Health Minister, in fact, had withdrawn his petition in the Supreme Court, alleging that it was rendered ineffective due to non-payment of dues after interference by the LG office. Now, the scheme called Farishte Dilli Ke was launched in 2019 to provide free medical treatment to road accident victims and basically encourage the passerbys to take them to the hospital for the treatment. Now, the LG says that the withdrawal of petition shows that Bhardwaj, who's the health minister of the national capital, his claims were baseless and intended to malign the LG office. Aam Aadmi Party, in response, has termed the LG's assertion contempt of court and attempt to manipulate and misinterpret the proceedings. Now, Aam Aadmi Party has claimed that the petition was disposed of because of the payment that was released by LG that came under pressure due to the notice from the Supreme Court. Have a look at the war of words. But before that, let me go across to my colleague Sabyasachi, who joins us live in the broadcast. Sabyasachi, with the Prime Minister's Apada attack yesterday and the counter by the Aam Aadmi Party regarding the lack of CM face, lack of narrative ahead of the assembly polls here in the national capital, it appears that the game and the elections and the war of words are now heating up. Well, that's right. See, as we are proceeding towards the all-important polls here in the national capital, the war of words is escalating between the BJP, Congress and the Aam Aadmi Party. See, yesterday, Prime Minister Narendra Modi termed the Aam Aadmi Party government as Abda or disastrous here in the national capital, and he said that the people of the national capital won't tolerate it this time, and therefore usher for change. Now, Prime Minister Narendra Modi also highlighted that if he could also have built a Sheesh mahal, but instead he prioritized the people of the national capital. Now, also Prime Minister Narendra Modi said that the people, that the government of the Aam Aadmi Party, they steal from the people of the national capital, and on the other hand they try to defend themselves. Now, he also spoke on how the Delhi government has not implemented the Ayushman Yojana here in the national capital. Prime Minister Narendra Modi also highlighted that how under the Ayushman Yojana several people across the country are getting benefit from it, but the people of the national capital are not getting the benefit under the Ayushman Yojana scheme. Now, Prime Minister Narendra Modi also highlighted that how the alleged scams has been done by the Aam Aadmi Party in different sectors like the education and the health sector. Now, Prime Minister Narendra Modi time and again said that the people of the national capital had enough of this corrupt government and they are ushering for change. Absolutely. So the fight is only intensifying ahead of the assembly elections in the national capital. Sabyasachi, stay on with us. We're getting our viewers